dear students. Assalamu alaikum. Hope you are fine with the grace of Almighty Allah. Today we are going to discuss about the evidences of evolution. As far as the evidence is concerned, evidence means the proof or the clue which indicates that evolution has taken place. एवोल्यूशन के कुछ एविडेंसेस, एवोल्यूशन के फेवर में कुछ एविडेंसेस हम आज पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन होता है, हो चुका है। एवोल्यूशन नेचर में एक फिनोमेना है जहां पे नए फॉर्म्स बनते हैं एंसेस्ट्रल फॉर्म्स से एंड टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो आज हम एक कुछ एविडेंसेस के बारे में हम बात करेंगे जो यही इंडिकेट करते हैं कि एवोल्यूशन फिनोमेना जो है दैट occurs in the लिविंग नेचर। यहां पे हम कुछ एविडेंसेस होमोलॉगस ऑर्गन्स, homologous organs, homologous organs क्या होते हैं? These are the organs which have different function but have same embryonic origin, similar basic pattern, but variously modified to perform different functions. Homologous organ वो organ होते हैं जो functionally different होते हैं, जो are functionally different but functionally different but originally same, यानी कि having same origin, originally similar, same basic organization but variously modified in order to perform different functions, यानी कि those organs of different species which perform a different function but originally they are similar and similar basic pattern is same but they differ in their form, that is organization, as they have variously modified to perform different functions, उनको बोलते हैं homologous organs। तो homologous organs for example four limbs of seal, man, birds, horse, etc. फोर लिम्ब अगर सेल की बात करेंगे हम, दैट इज मेंट फॉर फ्लैपिंग इन द वाटर ड्यूरिंग स्विमिंग प्रोसेस में वो मदद करते हैं। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैव बीन मॉडिफाइड इनटू द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि डिफरेंट फॉर्म है। मैन की जो फोर लिम्ब्स होते हैं दैट हैव बीन मॉडिफाइड इनटू द आर्म्स फॉर ग्रास्पिंग, फॉर पर्चिंग प्रोसेस, फॉर पिकिंग प्रोसेस, फॉर होल्डिंग द थिंग्स। एंड जो है फोर लिम्ब्स ऑफ बर्ड्स are modified into wings for flying purpose,
and four limbs of horse are modified in order to perform the function of running. ठीक है, तो यहाँ पे फोर लिम्स के रनिंग फंक्शन है, यहाँ पे फ्लैपिंग, स्विमिंग, यहाँ पे ग्रास्पिंग, होल्डिंग द थिंग्स, कैप्चरिंग. यहाँ पे बर्ड्स में आप देखोगे कि द फंक्शन इज दैट इज हेल्प्स इन फ्लाइट, यानी कि फ्लाइंग फंक्शन. बट एज पर एज अगर देखा जाएगा इनका ऑरिजिन जो है दैट इज बेसिक सेम एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन, तो variously modified होते हैं, perform different functions. Different organs of different species which have same embryonic origin but are variously modified to perform different functions. Functionally they are different and originally they are same. It means that sort of evolution indicates divergent evolution, यानी कि एक ही origin से कुछ जो ऑर्गेनाइज हुए कुछ पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स और बॉडी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन फिर वो डाइवर्ज हो गए इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, तो उस वाले एवोल्यूशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. सो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स. Homologous organs are the organs of different species, organs of different species which have same embryonic origin, यानी कि arised from the same origin, same basic pattern or basic organization, same basic organization, but different, but differ in functions and form. For example, four limbs of bat, seal, man, horse, birds. It indicates or reflects divergent evolution. Divergent evolution. Now, another evidence in the form of analogous organs. That is analogous organ. Analogous organs. Analogous organs होते हैं those organs which differ in their origin, embryonic origin, but perform the same function. They differ. These are those organs of different species which perform same function but are originally different, but are originally dissimilar, and their basic pattern is same but their organization is different. यानी कि organs of different species, which have different origin, यानी कि they differ in their embryonic origin, different origin, but perform same functions. For instance, wings of birds and
Wings of insects. Wings of insects. They simply here reflect the convergent evolution, यानी कि different origin है, embryonic origin different है, maybe ectoderm, endoderm, mesoderm different embryonic origin है, लेकिन converge हो गए हैं in order to perform, converge हो गए, focus उन्होंने किया है एक ही function पे, that is flight. यहाँ पे wings एक function, similar function wings of birds meant for flying and wings of insects meant for flying. As far as the organization of the wings of birds and wings of insects is concerned, that is altogether different. When different structures are being modified and they converge in such a way in order to perform the same function, they or those organs are referred as analogous organs. And evolution they reflect here is convergent evolution. It reflects convergent evolution. Is that clear? Now next, evidence of evolution is in the form of connecting links. Connecting links. What are connecting links? These are organisms or individuals which possess the characteristics of two different groups. Those organisms which possess characters of or features of two dissimilar groups or different groups. Different groups. For instance, certain connecting links indicate that they have been originated from the similar ancestor. They have got similar ancestor due to their similarities in their features, in their characters. ठीक है, कुछ organisms ऐसे होते हैं जो different groups के characters उनमें common होते हैं, तो उससे indicate होता है that this particular group is closely similar to another group, that is this one group has been descended from another group. ठीक है, that is evolution. For instance, Peripatus, इसको walking worm बोलते हैं. It is a connecting link between Annelida and Arthropoda. It is connecting link between Annelida and Arthropoda. यानी कि पेरिपिटस जो है इसमें कुछ आर्थ्रोपोड कैरेक्टर्स हैं, जस्ट लाइक लेग्स जॉइंटेड फीट होते हैं इसमें. पेरिपिटस आर्थ्रोपोड characters just in the form of jointed legs and annelid character होता है इसमें. Body is segmented. Segmented होती है, worm like. Body is segmented and worm like and has jointed legs. Jointed leg is the feature of arthropod and segmented worm-like body is the character of annelid. So this organism Peripatus possesses both. It has common characters of annelid and arthropod group. This simply indicates that this group has been originated from that
or we can say that arthropods and annelids have a common descendant or ancestor. It means evolution has taken place. ठीक है? Similarly, you may have heard about Neopelina. Neopelina. It is connecting link between Annelida and mollusca. It is segmented mollusk. Segmented mollusk. Neopelina शेयर करता है दो कॉमन फीचर्स of two different groups, mollusca and annelida. Molluscan character is that its body is soft. Its body is soft, just like the other molluscs. And annelid character is that it is segmented. Segmented mollusk है, metabolism show करता है, and this is the connecting link which connects one group with another. It means that one group has been descended from the another group, or both the groups have some common ancestor. Similarly, there is the evidence in the form of Archaeopteryx. Archaeopteryx. Archaeopteryx is the connecting link between Arthropoda and Reptilia. Reptilia and Arthropoda. Reptilian feature of this Archaeopteryx is muscular tail, teeth, etc. While as the arthropod it is connecting between link between reptilia and birds. Arthropod नहीं है, bird है. Reptiles and birds, और reptilia and birds. तो bird character जो है इसमें, that is 4 limbs modified into wings, and wings are feathered. Archaeopteryx is the connecting link between reptiles and birds. It is an organism which bears characteristics of two dissimilar organisms, that is reptiles, dissimilar groups, that is reptiles and birds. Bird character in the Archaeopteryx is that 4 limbs modified into the wings, and wings are feathered, and the reptilian character is muscular tail, teeth in the mouth, etc. Next evidence is in the form of vestigial organs. Vestigial organs. वेस्टिजल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्रेजेंटली सर्वाइविंग इंडिविजुअल में फंक्शनल नहीं है, लेकिन जो एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स में वो फंक्शनल हुआ करते थे, लेकिन प्रेजेंटली सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स में वो नॉन फंक्शनल है, यानी कि हैज बिकेम फंक्शनलेस. ठीक है? those organs which used to be functional in ancestors
but have became functionless in presently surviving forms. For instance, vestigial organs, there are 100 vestigial organs in man. For example, vermiform appendix, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, इसकी कोई फंक्शन ही नहीं है. अपेंडिक्स एज पर बायोलॉजिस्ट्स, अपेंडिक्स initially it used to be the functional in ancestors, and according to Charles Darwin, the ancestor of the man is ape-like individual being, and apes और herbivores. ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये सेलुलोज डाइजेशन के लिए हुआ करता था, तो यहाँ पे सेलुलोज डाइजेशन होती थी. आजकल का जो मॉडर्न मैन है वो प्लांट प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फीड नहीं करता है, उसका जो एनिमल फ्लैश पे बाकी चीज़ों पे फीड करता है. तो अकॉर्डिंगली दिस हैज नाउ बिकम द नॉन फंक्शनल इन मॉडर्न मैन. वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है. ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिना, auricular muscles of pinna, ear pinna, तो वो भी नॉन फंक्शनल है मॉडर्न मैन में. यूज्ड टू बी फंक्शनल इन एंसेस्टर्स, एप लाइक एंसेस्टर्स ऑफ मैन. नेक्स्ट इज विजडम टूथ, विजडम टीथ, जो आफ्टर 20s के बाद आते हैं ह्यूमन्स में, लेकिन उनकी कोई फंक्शन नहीं होती है. दे यूज्ड टू बी अपीयर इन द एंसेस्टर्स ऑफ मैन, दैट इज व्हाई दे अपीयर, एंड दे सिंपली इंडिकेट दैट दिस मॉडर्न मैन हैज बीन अराइजन फ्रॉम ape like ancestors or something like that according to this biological aphorism. तो सीकम है, कोसाइक्स एटस्ट्रा, सीकम कोसेक्स एटस्ट्रा. Now next example or evidence in favor of evolution is atavism. Atavism. Atavism means reappearance of ancestral characters in presently surviving organisms. ठीक है, reappearance of ancestral characters in presently surviving organisms, but these characters are absent in parents, their parents. यानी कि वो कैरेक्टर अपीयर होता है जो ऑलरेडी एंसेस्टर्स में हुआ करता था, लेकिन आज जो है उनके जो अपने पेरेंट्स है उनमें वो नहीं पाया जाता है. appearance of ancestor characters in reappearance of ancestor characters in presently surviving organism, except presently surviving organism but not found in their direct parents, यानी कि एब्सेंट इन देयर डायरेक्ट पेरेंट्स. एंसेस्टर्स में होता था, अब रीअपीयर हो गया दोबारा से, तो फंक्शन करने लगा. फॉर एग्जांपल मूविंग ऑफ ईयर पिना बाय सम ह्यूमन बीइंग्स. मूविंग ऑफ ईयर पिना, कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में, कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो ईयर पिना को मूव करते हैं. तो ये एप्स में होता है ये कैरेक्टर, वही ये मूव करते हैं. तो यहाँ पे दूसरा क्या है, लार्ज कैनाइनस, लार्ज कैनाइनस.
तो large, having a large canine tooth is the future of canine family, is the future of canines, or is the future of apes. But in certain individuals, presence of large canines or canine tooth indicates that this modern man has been erased. Its ancestor is the ape-like individual. ठीक है, ape-like organism. Large canines, dense body here, dense body here. तो ये dense body here, presence of hair cloud is the characteristic feature of a mammal, and humans are mammals. They have the body, they have the hair over their body, but presence of dense body here, ज़्यादा body here, बॉडी पे ज़्यादा जो हेयर बाल उगते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, तो दैट इज एंसेस्टर कैरेक्टर, जो कि ज़्यादा मतलब एपस पेपस वगैरह में होते हैं. तो दिस इंडिकेट्स दैट एवोल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस. ओके, थैंक यू. आज इतना ही, कल नेक्स्ट टाइम